बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ और हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक और अमेजिंग स्पीकर के साथ मौजूद हैं। मायरा हसन मेरी बैचमेट हैं फास्ट से, तो बहुत पुराना हमारा कनेक्शन है, लेकिन हम इतने अरसे से उस तरह कनेक्टेड नहीं थे जिस तरह बाकी बैचमेट्स होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे दोबारा कनेक्ट करके, लेकिन ये भी अपने फील्ड में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं। और आज हम इनसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो थोड़ा स्ट्रेटिजिक इन नेचर है, बिकॉज जिस तरह वक्त गुजरा है, जिस तरह टाइम गुजरा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रियलाइज़ करती जा रही हैं कि प्रोजेक्ट्स क्यों ज़रूरी हैं या कोई भी काम आप प्रोजेक्ट्स के ज़रिए क्यों करें। तो मैं मायरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें थोड़ा सा, और फिर लेट्स गेट इनटू द टॉपिक कि व्हाई डज शी थिंक कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो मायरा, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू। मैं मायरा हसन, मैं यूएसए में रहती हूँ और मैं इस बारे में डिस्कस कर लूँगी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं स्टार्ट करूँगी अपनी जर्नी से, जो ऑलमोस्ट 12-13 years ago, जब मैंने मेरी वन ऑफ माय फर्स्ट जॉब्स वो डिज्नी में थी। एंड एट द टाइम डिज्नी जो है वो डेवलप कर रहे थे एक गेम। एंड जब मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया तो उन लोगों ने बताया कि वो लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर रहे हैं स्टूडियो के लिए, क्योंकि उनका जो गेम था वो ऑलरेडी 2 साल लेट हो चुका था। और वो लोग हर दफा एग्जीक्यूटिव्स को बता देते कि हम लोग जो है वो 2 या 3 महीने में जो है वो रेडी होंगे, 2 या 3 महीने में रेडी होंगे, बट उनके पास कोई प्लान नहीं था। और जब भी वो कोई रिलीज करते थे उसके अंदर इतने ज्यादा बग्स होते थे, इतने इश्यूज होते थे कि वो और ज्यादा खराब होता चला जा रहा था। एज दे वर डेवलपिंग मोर, दे वर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग मोर बग्स देन फीचर्स। तो दे वर लाइक हम लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत है ताकि वो लोग डेवलपर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करें, एक प्लान डेवलप करें और एक डेट डिटरमिन करें जिसमें हम लोग लॉन्च कर सकें, बिकॉज हम लोग बहुत दफा लेट हो चुके हैं। एंड अब हम लोग लाइक एवरी रिलीज, एक प्रेस रिलीज होती है, मार्केटिंग होती है उसके, वी हैव टू प्रिपेयर। तो हम लोग चाहते हैं कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग plan, and that's how it started, my journey as a project manager. So that's exactly what we did. And ये सिर्फ एक दफा नहीं हुआ मेरे साथ, ये बहुत दफा हुआ है, क्योंकि मैंने डिज्नी में जब स्टार्ट किया तो फिर उनका गेम लेट था। मैंने फिर अपनी नेक्स्ट जॉब जो थी वो एक स्टार्टअप में थी और उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। दे सेड कि हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जो हमारे साथ प्लान करे और हम लोग अपनी जो प्लेटफॉर्म है, इट वाज सॉफ्टवेयर एज सर्विस, उसको हम एक्सपैंड करना चाहते हैं मीडिया क्लाइंट्स के साथ। एंड वी नीड someone with strong project management skills. So going back to that, अभी मैंने actually अपनी job switch की है जनवरी में, अभी इसी साल। एंड मेरे साथ एग्जैक्टली यही चीज हुई दोबारा, बिकॉज एक महीने पहले जब मैं इसमें आई, 12 years ago, एंड नाउ एक महीने पहले द सेम थिंग हैपेंड टू मी। एक टीम थी और उनके पास बहुत सारे, एक लिस्ट थी पूरे टास्क की कि बस हमें ये सब टास्क करने हैं। एंड लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम लोग वो टास्क करें, बिकॉज अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो फिर ऑब्वियसली जो टीम होती है, यूजुअली नेटवर्क इंजीनियर्स, सिस्टम इंजीनियर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, उनके पास बहुत सारे ब्रेक फिक्सेस होते हैं, कीप द लाइट्स ऑन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो लोग प्रोजेक्ट काम के ऊपर जो है, इट्स अ बैक बर्नर। जब आपके पास वक्त मिलेगा तो फिर मैं ये करूंगा, बट मेरा जो फोकस है वो ये है कि कोई चीज अगर ब्रेक हो गई है तो मैं उसको फिक्स करूं। एंड द फर्स्ट थिंग, they the same thing, that they weren't making progress. उनके पास कोई डेट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नथिंग। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही आपको करना होता है कि यू लुक एट योर रिसोर्सेज, योर टाइम एंड योर स्कोप, एंड यू कम अप विद अ प्लान। आप एक प्लान करते हैं कि अगर आप उसको सही तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉल पार्ट्स, और वो कौन करेगा, कितनी देर लगेगी, एंड देन हाउ डू यू यू हैव अ डेट जो
हो सकती है, which is possible, not something कि हमें ये मार्च में करना है और we will backtrack. That's not how it works. So we basically did the same thing. We broke it into chunks and we, हमने prioritize किया कि क्या चीज पहले करनी है, क्या चीज बाद में करनी है, and फिर आपने सब लोगों को बताया कि आपको ये चीज इस वक्त तक करनी है, along with everything else you're doing. So that's the advantage of a project based organization, क्योंकि सब लोगों को पता होता है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनको क्या चीज कब करनी है, ताकि उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अपने वक्त पे रिलीज हो सके. सो द वे जिस तरह से मैं देखती हूँ कि हर अगर आपके पास टीम में 8 या 9 लोग हैं, बिकॉज मैंने जिस तरह काम किया है, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी किया है, ऐप डेवलपमेंट भी किया है, डिप्लॉयमेंट भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी किया है, तो हर आदमी जो है वो अपने काम में फोकस होता है. लेकिन एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको मल्टीपल लोगों की जरूरत होती है. एक आदमी डेटाबेस का होता है, एक जो है वो नेटवर्क इंजीनियर होता है, एक आदमी केबलिंग कर रहा होता है, और उनके पास ये वक्त नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें. एंड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप पूरी पिक्चर को देखते हैं कि पूरी पिक्चर किस तरह फिट होती है एक चीज को मुकम्मल करने के लिए. एंड the goal is to keep everyone focused, and the goal is to keep everyone you know to bring visibility, ताकि सब लोगों को पता हो कि कौन क्या करेगा और कब तक करेगा, and then to prioritize. मुझे कमेंट आ रहा था दिमाग में, जैसे आपने कहा ना ये कोऑर्डिनेट करना होता, तो मेरे जहन में वो म्यूजिक कंपोजर जिस तरह ऑर्केस्ट्रेट नहीं करता है टू प्रोड्यूस म्यूजिक, एट द एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उस पूरी चीज को एक साथ लाना, एंड that's the view of the project manager as you define it. You have to see the big picture, you don't have to see the small picture, you have to see the big picture के as like software development के अंदर जिस तरह से जो architect होगा वो सिर्फ design और build में focused होता है, जो developer होता है वो सिर्फ अपनी development कर रहा होता है, and then the testing. So you have to make sure कि सब लोगों को पता हो कि उनका कब काम मुकम्मल होगा, ताकि जो next team है वो उसको ले सके, उनके पास availability हो और वो लोग जो है उसको implement कर सकें. So छोटे छोटे chunks को लेकर एक पूरी चीज मुकम्मल करना, that's the bottom line. It's like having a party at home. True. एक बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग मेंशन की कि you have always been in this situation कि आप हीरो वाला रोल kind of, you're coming in and cleaning up some mess. So obviously that's a skill in itself. आज का दिन नहीं है जिससे हम उस पे डिस्कस करेंगे फायर फाइटिंग पे, but I do want to learn from you कि आपके एक्सपीरियंस में ये बिफोर एंड आफ्टर वाली अगर हम स्टोरी लें, इन योर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट you've been through, and you seem to be always entering a position where it's not as good. फिर आप आई, you introduced a projectized model and things change. So अगर इस perspective में थोड़ा before and after, if you can share your experience, I think that'll be useful for our audience. Absolutely. So I can tell you कि अभी मेरे like recent position के अंदर when I started एक पूरी लिस्ट थी कि सब लोगों को as a team हमें ये सब कुछ करना है, but it was ये नहीं था कि I mean they were trying to, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि वो project run करें because उनके पास Kanban boards and they were like हम kind of agile है because हमारे पास Kanban board है, but Kanban board के अंदर ये था कि एक पूरी लिस्ट थी और like कोई जा सकता था बोर्ड के अंदर, and when you have time आप पिक कर सकते थे कि आपको कौन सी बोर्ड चाहिए, like what epic you want to work on. There was no priorities, nothing. And जो projects लोग काम कर रहे थे उसके ऊपर उनकी बहुत सारी चीजें थी कि we were like हम लोग vendors का इंतजार कर रहे थे, SOW का इंतजार कर रहे थे, legal reviews हो रहे थे. So really from now हम लोगों ने उस पूरी लिस्ट को लिया and we looked at it and said कि हम लोग क्या चीज इस क्वार्टर में करेंगे and क्या चीज नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे. So let's move things in quarters, then let's put names कि कौन क्या चीज प्रोजेक्ट है और क्या चीज एक मेंटेनेंस टास्क है, because there are two very different ways to do them. Sure. And जो चीज प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, कौन उसके ऊपर काम करेगा, एंड नाउ इट्स लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपकी मेन फोकस होना चाहिए.
एंड जो आपका मेंटेनेंस का वर्क है या फिर कीप द लाइट्स ऑन स्टफ है, वो जो है इट्स सपोज टू बी योर स्पेयर टाइम, कि जब मेरे पास unless it's a priority. Yeah, I was about to And say that every keeping the lights on takes priority usually. Like, in how do you balance that? exactly, and that's the thing कि there has to be accountability, right? Because Mm, आप जब प्लान करते हैं तो फिर आपको I have to put a line in that KLO took over for the 2 days, and therefore हमारी जो date है वो slip हो गई. mm, And those are the things that really help, because honestly, as an organization, executives जब होते हैं वो देखते हैं कि हमें जो है ना ये 4 चीजें करनी है, और आप लोगों के पास इतने लोग हैं, आप ये सब चीजें कर लें. फिर mm, 3 महीने होते हैं एंड यू हैव अपना क्वार्टरली रिव्यू, एंड उसमें आप बोलते ओ मैंने तो 3 चीजें की नहीं, क्योंकि mm, मेरी टीम जो है हर वक्त ब्रेक फिक्सेस के ऊपर काम कर रही थी. mm. But there's no data to back it up. Right, And right. one of the most important things is to have data to back it up, to Mm, know कि आपकी resources किस चीज के ऊपर काम कर रही थी. Transparency, visibility, prioritization, mm. organization के लिए बहुत ज़्यादा important है. So, सही. and also, all those छोटी छोटी चीजें जो हर एक के पास आती हैं, you lose your focus. And I'm very much about like letting people focus on the task at hand, Mm. ताकि वो लोग focus करें उस चीज के ऊपर जो जो सबसे ज्यादा important है. Important है. एंड सही. जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनके अगर एक टीम के अंदर हर चीज प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू जाती है, तो Mm, बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ एंड वो बोलती हूँ, ओके इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसको कब करना है, ओके ठीक है, ये 1 महीने बाद इसके बारे में बात करेंगे. mm, mm. सो अच्छा, मायरा, तो ये बिफोर आफ्टर की थीम में ही अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक चले जाएं, द पीपल हु विल एक्चुअली बैक दिस अप इफ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जहाँ पे हाँ पहले एक नॉन प्रोजेक्टाइज मोड में काम हो रहा था और अब एक प्रोजेक्टाइज मोड में काम हो रहा है. तो लेट्स टेक इट टू द सी लेवल स्वीट और लेट्स से द स्पॉन्सर्स. how did you make that shift also from a they उनको भी तो सोचना पड़ेगा ना कि हाँ भाई अब हम उस तरह से काम नहीं करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे. अब हम एक प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं. So unless that support is coming from that top, तो नीचे पर change नहीं हो पाएगा. Did you face those kind of challenges, or were they already expecting कि नहीं भाई it's not working what we were doing earlier and we do need to change? यस, How did that work? एब्सोल्युटली. सो आई एम गोना से लाइक, मैं बहुत सारे लोगों के साथ पहले बात कर चुकी हूँ जो मुझसे बोल चुके हैं कि ओ हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लीन ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों के जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं. Hmm. Hmm. Also, I think a lot, especially earlier on in my career, a lot of like project management जो थी वो, it was like a coordinator, it was like kind of like an assistant really, Right. क्योंकि आप database team के साथ coordinate करना है, okay, setting up meetings, that's the Hmm. project manager's job. Hmm. But आपकी that's not the focus of your job. You're trying to, आप कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग आपस में communicate करें effectively, पर आपकी job ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ meetings set up कर रहे हैं, right? And it's Right. a very common misconception for project managers कि all they do is set up meetings. True. So I personally feel कि अगर अगर आपके पास opportunity है और एक company ने आपको already hire कर लिया है, you have to show them the difference that you're making within that team, and you have to be able to, it's important कि आप highly organized हैं, आप highly efficient हैं, आप highly, you can help the functional manager think. Because I feel that जो बहुत सारे जो टेक्निकल लोग होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, एंड देन मुझे उनको बोलना पड़ता है नहीं, हम इस चीज के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, ये जो 30 मिनट्स है हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे एंड इसका प्लान डिटरमिन करेंगे. Hmm. एंड 1-2 महीने में जो एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं उनको जब रिपोर्ट्स मिलने लगती हैं, उनको जब ट्रांसपेरेंसी वो लोग देखते हैं, जब वो लोग रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. Hmm. Hmm. And like I said, at Disney, I was the first project manager that was hired at Disney. I was one of the first project managers at a startup. Hmm. um and I mean now to khair, we do have project managers in our organization, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्या difference create कर रहे हैं. ठीक. Don't be that project manager who only sets up meetings. Sure, Be sure. do more than that. There's more value. Yeah, there's more value in the role. So I think इसी को थोड़ा continue करते हैं. So
how do you show that value, especially in an organization which is not used to this, right? So I think you touched upon it a little bit, like isko thoda elaborate karein कि how would you show कि हाँ भाई I have arrived and this is the change that's coming. How would you actually show that, or how did you show that? So the main thing is to solve the problem. There's हर company जो लोगों को hire करती है, they are trying to solve a problem, right? तो जब आप interview करते हैं, आप बोलते हैं, okay, हमारे पास, ये problem है and we need to solve this problem, Mm-hmm. They tell you interview process में ही वो लोग बता देते हैं कि Okay. हमारी ये problem है, इसीलिए हम ये head count कर रहे हैं and हम देखना चाहते हैं कि इससे क्या हमें improvement होती है. And सबसे important चीज ये है कि to focus on that problem, Okay. especially in the beginning. अगर कोई आदमी आपको मतलब जैसे अभी माय करंट जॉब, इफ उन लोगों ने मुझसे बोला कि हम लोगों के पास बहुत सारे टास्क हैं, हमारी टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा अनमोटिवेटेड है, कोविड की वजह से हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ है, हम लोगों ने लाइक 60% ऑफ आवर वर्कफोर्स अक्टूबर में ले ऑफ की थी, एंड अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास बजट है कि हम वेंडर्स को हायर कर सकते हैं. Okay. So you have to solve the problem. Like, how do you deal with the problem, address the problem? Immediate हम मतलब quick wins, and look for those low hanging fruit, जिसना कहते हैं कि भाई just try to solve the immediate problems and tell them you're arrived, so to say. and small, even your plan should be like small increments के देखें, अब ये जो पूरी जो लिस्ट है इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड टास्क्स, Right. एंड देन हम लोग उसके अंदर नेम्स ऐड करेंगे. ओके, देन हम लोग जो चीजें जो अभी नेक्स्ट इस क्वार्टर में नहीं करते हैं उसको हम लोग मूव करेंगे टू द राइट क्वार्टर्स. देन हम लोग उसका एक एक फेज डिटरमिन करेंगे एंड एक एक प्रोजेक्ट को लेके उसको प्लान करेंगे. एंड लोग लिटरली देन दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक यू के या थैंक यू फॉर कीपिंग मी फोकस्ड. यू नो even when जैसे मेरे पास मीटिंग्स होती हैं बहुत दफा, आई टेल, मैं अपने engineers को बताती हूँ कि like I'm here to help you, so tell me, what are you doing, and वो कौन सी चीज है जो जो आप कर रहे हैं जो मैं कर सकती हूँ, like coordinating, because we have different teams, right? Like database team, and then there's the cabling vendors, and जो कुछ लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है कि यार मैं अपना काम कर सकती हूँ बट मैं दूसरी टीम के दूसरे साथ के through. कम्युनिकेट करना, उनके साथ उनकी मैनेजमेंट से अप्रूवल्स लेना, एंड दैट्स द पार्ट दैट आई कैन हेल्प. सो व्हेन दे स्टार्ट सीइंग कि वो लोग वो काम नहीं कर रहे जो वो करना नहीं चाहते, they actually enjoy having you there, or like meeting notes or reminders, Right. कि Right. hey, you said you were going to get this done like today, what is the status? Interesting, interesting. Okay, so let's hypothetically speak कि आपने एक साल गुजार लिया अपने नए रोल में. I'm keeping it very real because this is where you are. You just joined a new company January में. You've tried to change it, but obviously इस चीज को mature होने में and people getting used to building a habit कि भाई yes, focus and delivery probably let's say takes a year. How do you see this now continuing? Projectized to हो गई organization, then what's next? What's the next level that you would want to take your organization to in terms of project management? Yeah. So I think even in terms of हमारी जो personal life है हमें constant improvement करनी चाहिए. I mean जो भी चीज आप कर रहे हैं, whether it's like you know whether you're just raising your kids, I don't think project management सिर्फ काम पे implement होती है, especially me as kind of like a working mom. I feel कि project management मेरी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा वो होती है. Right. Because whether I'm doing a trip, whether I'm planning a party, whether I'm planning guests at my house, कुछ भी मैं चीज कर रही हूँ मेरे लिए बहुत important है कि मुझे पता हो कि वो कब होगी और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, and क्या मेरी checklist है. So as an individual it's important कि आप हर वक्त सोचते रहें कि आप क्या कर सकते हैं improve करने के लिए. So if you have a prioritized list and there's timelines, then how can you automate that list? How can you look at tasks जो लोग कुछ कर रहे हैं, maintenance tasks, and how can you talk about कि इसको automate कर दें तो कितना time हमारा, like have those conversations. Don't be शुरू में जैसे मैं, I mean I UTP, me, I'm not very technical. I was not computer science material, but in the beginning I was afraid कि अगर मैं कोई ऐसा सवाल पूछूंगी जो which will make me look stupid कि अरे इसको तो ये पता ही नहीं है कि ये automate नहीं हो सकता. But sometimes लोग
focused होते हैं on only what they're doing. They're not looking at the big picture, mm, you know. mm. And sometimes those questions really help. Like it's fine अगर आप बोलें कि oh you know I'm really not sure but tell me कि अगर हम इस चीज को इस तरह करें तो बेहतर नहीं होगा. Like Right. I'll give you an example. Like a friendly kind of a, kind of question rather than a technical question, so to say. Right. So Mm, we actually have a learning team and they do all these sessions. And you know मेरी coworker थी, she said कि oh मुझे बहुत सारी teams reach out कर रही हैं for you know learning sessions. And I mm, was like अगर तुम उसको अपनी recording भेज दोगी तो no like recording भेज दो, क्या जरूरत है बार बार वही session करने की. And she's mm. like नहीं उन्होंने मुझसे बोला है कि उनको live session चाहिए. So you have to say these things because you're not, you know, like the old me शायद मैं बोलती नहीं, उसकी जॉब ये है कि वो जो है वो लाइफ Yeah. कोच लाइफ वो करती है. But Mm. honestly you have to like you have to make those comments. Think out of the box. Make them think कि भाई ऐसे भी तो हो सकता है. Think We've out of been the doing box. this. हाँ. Yeah, like you know what if we stop using 5 tools and we take जो हम इस टूल में करते हैं वो हम इसमें क्यों नहीं कर सकते, you know, Mm, mm, mm. you And know because just we have that, I guess जो आपने पहले कहा कि project manager को क्योंकि एक wider view होता है of things and how they are working, you're actually learning from project to project कि what worked well and what didn't work well. So would you like to comment on that? Lessons learned and how would you? so I think that बहुत सारी चीजें जो हैं आपको वो experience के साथ आप learn करते हैं, that's for sure, because आप you know that's why it's important to have experience. कोई चीज आपके experience को replace नहीं कर सकती. And इतना ज़्यादा you know the way technology is changing so rapidly, I think even अगर मैंने 5 साल पहले graduate किया होता तो मैं वो चीजें नहीं सीखती जो अब market में हो रही हैं, you know. Mm, mm, So going back to your question, it's important to to remember small wins. And sometimes सबसे ज़्यादा important चीज़ आपके लिए होती है as a project manager, it's to think of risks before they come, before they appear. You know, risk mitigation. mm, Um, so the most important thing is कि आप देखें कि क्या हो सकता है, what could go wrong, और अगर वो हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, you know. mm, mm, And to constantly highlight that to your team, you know, okay, like this is a possible issue mm. and this is the remediation plan. Right. And We're if already agar, ready for it. We're already thought about what could go wrong and already हमारे पास एक उसका and response what है, is so the to say. effect, you know. Mm, So of that's course. always an important question to ask कि आप जब project plan कर रहे हैं या फिर status report वो कर रहे हैं, or या even अगर meeting you know weekly meetings, to Mm, make sure कि आपके जो risks हैं they're highlighted mm, so that people are looking at it and saying कि like जैसे पिछले साल मेरे जो सारे infrastructure projects थे they were impacted by corona. right. So that was a very visible, you know, I was मेरा एक project था which was in UK, and UK के अंदर corona was pretty bad in December. Mm, And that was the thing, okay, like depending on how, you know, COVID-19 situation is in UK, there may be significant delays in timeline. mm, So mm, you know it's important to just look at the big picture and think about your previous projects. mm. And उसमें से obviously then decide कि are you going to accept that risk, are you going to avoid it, or the typical response to risk. And उसमें I guess we move towards conclusion as well, that engagement with the right stakeholders, कि ये risk है but who needs to know about this. I guess everybody needs to know about it because everybody's on that project and everybody's working towards it. So I think a few points on that and then we can go towards a summary and conclusion. Mm-hmm. So I think it's important to ask the right questions, you know, especially कभी कभार आपको you know मेरी जो advice होती है based on my personal experience, I think काफी दफा हम लोग बहुत डरते हैं सवाल पूछते हुए. Especially I think women, you know, it's a very known thing. um you don't want to draw attention to yourself, you don't want to look stupid, you want to look smart. And the most important thing is to find the right कि आप सही सवाल, you don't know कि वो क्या सही सवाल है, लेकिन सही वक्त पे पूछना भी बहुत important है. हो Right. सकता है कि आपके दिमाग में कोई सवाल आया है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो मे बी उस वक्त नहीं, लेकिन बाद में जाके एक you know like you know Mm, can I have 5 minutes and then or send an email, find the right way to address your question. Because mm, जितना आपको समझ में आएगा आप उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे. mm. That's the bottom line.
by the way, that doesn't apply to just women. As in, I would want to sleep over sometimes on some questions as well because I don't want to ask it there because I'm not ready to, kind of address what comes out of my question. So that's not very, just gender based. But I do appreciate that, and that should change, by the way, since a lot of women youth in Pakistan would also be listening to us at the workplace. Feel free to ask a question, isn't, because at the end of the day, अगर आप एक role में हैं जिसमें you are expected to identify risk, you are expected to protect the bottom line, the timeline, the cost, and you're totally expected to ask that question as well. And I think that's the change that needs to happen in the workplace in Pakistan, as well as more and more women get into the workplace. तो मायरा, आई थिंक थोड़ा सॉरी, आप कुछ कह रही हैं, फिर मैं समरी No, की no. तरफ जाऊँ. नहीं, मैं बस बोल रही थी कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्स विद लीडरशिप. वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं. यू हैव टू गिव सर्टेन थिंग्स टाइम, आस्क द क्वेश्चंस एंड फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज बहुत दफा हर कोई गलती करता है, बट डोंट बी अफ्रेड. हर चीज को समझना जरूरी है. एंड अगेन, लुक एट द बिग पिक्चर. एंड समटाइम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट या कोई बहुत ही बैड आउटकम आ जाए, टू जस्ट उसको छोड़ के 5 मिनट उसके बारे में सोचें, बिकॉज यू नो यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम एंड देन आपके पास सोल्यूशन आएगा. सही, और कुछ नहीं द तो लर्न, मोर उसमें से कुछ सीखेंगे आप. that itself is something worth the failure, so to say. Even if there is a failure, आप कुछ सीख रहे हैं उसमें से. डोंट वर्क ऑन इम्पल्स. मेरा मतलब है कि मतलब बस जल्दी जल्दी ओके ये हो गया तो अब इसको ये कर देते हैं. मेक श्योर कि आप जो है देयर एक प्रोसेस हो आपके थॉट में भी. एंड जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, लोग उसको पीपल आर गोना रिस्पेक्ट इट कि लाइक ही और शी नोज कि वो क्या कर रहा है. Sure, क्योंकि sure. वो लोग उन लोगों को पता है कि किस तरह से, स्पेशली जब आप सॉफ्टवेयर रिलीजेस, आई डोंट नो यूटीपी, द बग्स दैट कम. एक आप लाइव हुए एंड आपके पास 200 बग्स आ गए, Sure. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ये लो ये सब चीजें फिक्स करो, यू हैव टू बी लाइक नहीं, क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Exactly. स्टॉप. यू नो it's very important to Yeah. halt and think. I guess that's what the project needs as well, a calming presence. And sometimes the project manager, in fact, I would say the project manager has to play that role to say, listen, yes, we have a problem. Like, this is not going to be the solution. कि हम बस impulsively, try to put out fires. We need to kind of No, have a plan on that as well, so to say, a we cannot response. be in firefighting mode all the time. It has to, Mm. if you're not, I mean, if you're like that थोड़े दिन के लिए, that's fine. लेकिन ये एक permanent वो नहीं हो सकता, for sure. Excellent, Myra. It's been a wonderful conversation. मैं थोड़ा सा summary ले आता हूँ ताकि I think it helps our audience as well. So we spoke about the importance of project management in organizations. आपका experience was very useful. That you've been in this hero position. That's the word I'll use, where you've come in and landed, swooped down, and organizations were struggling with their work, and you've played that role. So you shared आपने अपना experience हमारे साथ share किया कि किस तरह आपने एक नॉन प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया. मेक पीपल रियलाइज कि कैसे एक दूसरे का काम डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और वो फोकस किस तरह लाएं अपने टास्क पे, rather than trying to pick up the thing when they get time. That's not how things are delivered. You mentioned that. फिर आपने मेंशन किया कि ये बिफोर एंड आफ्टर में कैसे आपने चेंज देखा. इन योर एक्सपीरियंस, इन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, यू सॉ हाउ इट चेंज. हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी बात की कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टीम बट इट्स आल्सो अबाउट द स्पॉन्सर्स, द एग्जेक्स. उनको भी नजर आना शुरू हो जाए और अ पीरियड ऑफ टाइम के कैसे थिंग्स आर नाउ प्रोग्रेसिंग देयर. इट्स मोर ट्रांसपेरेंट, उनको रिपोर्टिंग मिल रही है, उनको प्रॉब्ली डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो रही है बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग द इश्यूज एज अर्ली एज पॉसिबल. और फिर आखिर में आई थिंक आपने थोड़ी ह्यूमिलिटी की बात की, एंड आई वांटेड टू एंड ओवर देयर दैट you weren't that technical at university. I think everybody has this role which they have to find. It's not about everybody. We don't need all to be technical. We don't need all to be particular sort. I completely agree with that. And that's something that took me a really long time to understand. Because, I mean, it's either you are or you're not. But I think हर पूरी दुनिया में हर एक के लिए एक जगह है. You have to find Absolutely. what you're good at and work on that skill. For me, it was like, people say that
I have a friendly face, and I can get along with people. And that's what you can use and to for your advantage. So find Absolutely, what your absolutely. strong quality is, and use that, whatever it is. Beautiful. That's a great passing, ending message as well. That you don't need to be everything or be like somebody else. Just find who you are while you are here, and then go with the flow. How's And that? enjoy it in the process. I Beautiful. actually enjoy project management, so that's enjoy it too. एक्सेलेंट एक्सेलेंट सो हम मायरा का फिर से शुक्रिया अदा करेंगे अपनी ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ पार्टिंग वर्ड्स एज ऑलवेज माई सीरीज को होपफुली आप इंजॉय कर रहे हैं और अपने कमेंट्स के जरिए जो है हमें बताएं हाउ यू आर फीलिंग कोई फीडबैक है हमारे लिए तो प्लीज़ हमें शेयर करें ताकि आई कैन डू दिस बेटर और अपने लोगों और लोगों से शेयर करें और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं दोबारा से किसी और गेस्ट के साथ हाजिर हूँगा उनसे भी कुछ दोबारा कुछ सीखेंगे और यूटीपी के यूटोपिया में इस सीखने सिखाने वाला माहौल जो हम क्रिएट करें कंटिन्यू करेगा तब तक के लिए मेरी तरफ से इजाज़त अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद Thank you.